वेलकम बैक टू वेलकम। तो कैसे हैं आप सब? करते हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम देखने वाले बहुत अमेजिंग चीज़ें जो आपको और मुझको सबको काफ़ी हैरान करती हैं। ऐसे हम देखने वाले हैं कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं, मतलब कुछ तरह नहीं, मतलब कि उनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं काफ़ी अजीब हैं जो कि आम इंसान के पास नहीं होती। आज हम उन्हीं चीज़ों को चेकआउट करने वाले हैं। काफ़ी मतलब कि अजीब होंगी, इसलिए दिल थाम के बैठेगा। लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके। On this planet, but every once in a while we discover someone utterly extraordinary. Today we're going to look at people you won't believe exist. Better stay tuned for number 1 because it might be just the weirdest thing you'll see today. Let's go guys. Number 8. Let's guys, देखो दिल थाम के बैठना। बहुत अगर दो लोग में एग्जिस्ट करते हैं, काफी लोग वो यूनिक भी हैं। Let's see. Mandy Sellers. Mandy Sellers. This Englishwoman of Accrington, Lancashire, has a rare genetic disorder that causes her legs to reach a morbid and extraordinary size, which prevents her from even walking. The rest of her body, however, is quite the normal size. At one point, her lower extremities weighed an incredible 210 pounds. Okay. A few years ago, the growth of her legs led to a rather nasty infection, and her left leg had to be amputated. Now this is where it gets interesting. Sometime after the amputation, her left leg miraculously started to regrow at a rapid rate. And 2 years after the amputation, the leg had grown to 1 meter in girth and was nearly too large for her prosthetic limb. Soon after that, Mandy started taking pioneering medications that have seen her legs shrink down to around 150 pounds. Doctors are not quite sure how much her legs will shrink. One thing is certain though, no matter what happens, Mandy Sellers will keep her positive attitude towards life. Mandy Sellers continues to have clothes and shoes specially made because of her size and drives a specially adapted car. नाइस है। ये जो खातून, इनका नाम है मैंडी, इनके पाँव मतलब कि कुछ इनकी जीन्स कुछ ऐसा कोई इशू हो गया था जिसकी वजह से इनके पैर काफ़ी, उनका साइज़ बहुत बड़ा साइज़ है। आप जैसा आपने वॉच किया होगा, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही हैं, जी रही हैं अपनी लाइफ को, और जो डेली के होते हैं काम वो कर रही हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन है। नेक्स्ट के आगे अब क्या आता है? Number 7, Lizzie Velasquez. Lizzie has a rare disease which results in her being extremely skinny. You might find it hard to believe, but Lizzie's body has 0% fat and she weighs just 64 pounds despite consuming between a staggering 5,000 64 pounds। बेसिकली अगर आपको नहीं समझ, तो ये है कि ये खातून है, इनको एक ऐसी बीमारी है जिससे इनकी बॉडी में 0% फैट है। यानी कि अगर करें 64 पाउंड्स को, अगर आपको समझ नहीं आती तो 64 पाउंड्स को अगर हम किलोग्राम में करें तो कितना बनता है, चेक करते हैं। तो ये तकरीबन बनता है 29 kg। मतलब कि इनका वेट 29 kg है। कैन यू इमेजिन इट? सोचो गाइस। और आप शुक्र अदा करो कि आपको अल्लाह ताला ने तंदुरुस्त बनाया। अब आज आगे देखता हूँ कि और किस तरह लोग आने वाले हैं। to 8,000 calories per day. This is due to marfanoid progeroid lipodystrophy syndrome. On top of being very hard to pronounce, this syndrome basically means that her body isn't able to accumulate fat, making it impossible for her to gain weight, no matter how much she eats. Lizzie is also blind in her right eye and can't see very well out of the other. As you can imagine, Lizzie was the subject of cruel bullying, with many people calling her the ugliest woman in the world. And when she was just a child, other kids were straight up refusing to even talk to her. However, Lizzie decided to stand up against all the bullying and work hard to achieve her goals. She started her own YouTube channel, which has received almost 70 million views to date. Lizzie even had a documentary made about her in 2015 entitled A Brave Heart, The Lizzie Velasquez Story. तो गाइस देखो, ये सिर्फ बंदे नहीं होते, ये बंदे हैं जो आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं। कोरोना इनके पास क्या कुछ नहीं था, मतलब कि एक बंदे जिसकी एक आंख भी खराब है, उसकी फिजिक भी कुछ ऐसी है कि कोई बंदा कोई स्ट्रॉन्ग काम कर ही नहीं सकती। इसका वेट ही 29 kg वेट है, और फिर भी इन्होंने अपने ड्रीम्स, अपने गोल पूरे किए हैं। दैट्स एन अमेजिंग मैन, बहुत आला। वहाँ चलते हैं आगे और कौन आने वाला है।
Number 6, Abdul Bajandar. Abdul Bajandar from Bangladesh suffers from an extremely rare disease known simply as epidermodysplasia verruciformis. I am pretty sure I just butchered that name, but let's just keep it rolling. Anyway, this condition, caused by an immune system defect, makes Abdul develop growths on his limbs that look exactly like tree branches, hence the name Tree Man. This condition is quite rare. In fact, only 200 cases have been documented so far. Poor Abdul has been struggling with this disease for more than 15 years. He first noticed the branches at the age of 10. The condition later became so severe that he was forced to retire from his job as a rickshaw driver. At one point, he actually tried cutting them off himself. But no matter how hard he tried, the branches kept reappearing again and again. Since 2016, Abdul has gone under more than 25 surgeries. Doctors removed a whopping 11 pounds of the growths in 2017. And just when they thought he had been cured, the branches reappeared. Now, Abdul is begging the doctors to amputate his hands because he can no longer handle the severe pain they cause him. Pretty sad indeed. तो गाइस ये बिल्कुल हकीकत है। एक बंदा है जिसके हाथों में वुड उग रहा है, लकड़ियां उसके हाथों में उग रही हैं, पैर में। शॉकिंग भाई, शॉकिंग। माइंड ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग। Rodriguez. The nickname Haffy isn't hard to understand once you get a look at Carlos Haffy Rodriguez. I mean, the man is missing the top half of his head. He became internet famous when his mugshot went viral in 2010. As you can imagine, it wasn't that crime that made him famous, but rather his bizarre appearance. However, Haffy wasn't born with his head this way. Instead, it was the result of the injury he suffered during a car accident when he was just 14 years old. The young Carlos was driving, get this, while on drugs when he hit a pole. Next thing he knew, he was thrown through the front windshield and landed on his head. His head was flattened and he lost a portion of his brain and skull. But he survived. His head, however, retained the flattened appearance, causing many people to believe that his mugshot was photoshopped. Now, Carlos uses his deformity as a means to try to help others avoid drugs. Seriously, next time you think about driving while on drugs, just remember this dude's head. Guys, देख लो, इसलिए कहते हैं कभी भी ड्रग पी के, अल्कोहल पी के ड्राइविंग ना किया करो। कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं होता क्या हो जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अब बाकी थे आगे क्या कुछ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं लोग एक नया टाइप कंटेंट, एक नया टाइप वीडियो बना रहा हूँ, यानी आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, ज़रूर वीडियो को लाइक करना। और एक और बात, चलो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। बस शुक्र करो कि आपको अल्लाह ने तंदुरुस्त बनाया। कोई भी मतलब कि आपको कोई भी बंदा लिमिट नहीं कर सकता, आप खुद अपने आप को लिमिट करते हो। तो ये थी आज की वीडियो। कर तो मैं ज़रूर इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा, और मैं ज़रूर इन सब के लिए करता हूँ दुआ के ये एक अच्छी लाइफ जिए, तो और एक नॉर्मल लाइफ जिए, और जो बीमारियाँ वो ठीक हो जाए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में अपने हालत का टिल दें। बाय बाय।